Yes, sir, you have beautifully narrated the contours of India's present foreign policy. And as you have described, we may have moved from a passive, non-aligned movement and less confidence to proactive foreign policy. And our Prime Minister's personality is also something that is a factor into it. So can you describe Modi ji as the statesman and what are the features of it? Thank you, sir. Um, you know, frankly, you don't need an answer. You know why? You don't need an answer, because when you see Modi ji, walk, get up, go to the stage, somewhere you have that sense of 1.3 billion Indians, because he embodies India. He carries it on him. Now, I must say, because I have the good fortune of actually physically being there and watching it. You are watching it on a screen. I'm watching it in real life. I would say, very honestly, among Indians, and again, I say this to you as a across the board statement. I mean, I talk to my especially to my younger relatives and friends and co-workers. There is today that sense of pride which he evokes with his presence on the international stage, with his positions on this international stage. And I think that too is part of the India way. That is a message to everybody saying, look, this is a different India. If we have tough things to do, we will do. If there are sacrifices to make, we will make. If we have to be generous to people, because also remember, it is not only sacrifice which requires courage, even generosity requires courage. That in the middle of COVID to say, yes, I will also help others. That is also a very courageous thing to do. So to me, as I said, you don't need words. You just have to see that picture. Sir, good evening, sir. I am Jnanada Sharad Vasankar, student of Abasaheb माइक Garware थोड़ा College सा of जवळ धर Arts. प्लीज. माइक थोड़ा सा जवळ धर. राइट. हाँ. Am I audible? हो, yes. Good evening, sir. I am Jnanada Sharad Vasankar, student of Abasaheb Garware College of Arts, Department of Political Science. And sir, my question is, as you mentioned that India should become the voice of Global South, how do you see G20 summit helping India? See, what has happened in the last year, because of the Ukraine conflict, the price of oil has gone up. Price of food has gone up because exports of wheat and cooking oil from Ukraine were not taking place. Generally, price inflation has gone up, price of metals, etc. Now, the person who feels the most, see, even amongst us, if there is a shortage, who will feel the most? The richest person has the most money in the pocket. The poorest person has very little in the pocket. So today, the developing world, the South is feeling the pain. The South is seeing food shortage. South is seeing fuel shortage. Sometimes they cannot afford things. Now, somebody has to speak up for them. Now, most of the developed countries are looking only at their concerns. So that is why Prime Minister decided that we must take this responsibility. Our G20 must be a G20 for the whole world. We must stand up for the South, and not just like a statement कि हाँ भाई हम उनके लिए बोल रहे. He decided, let us meet with them. So for 2 days, about 5 or 6 ministers and Prime Minister himself, we took the whole day to meet with our counterparts. We consulted 120 countries plus 123, I think. So that today we can say we are speaking for the South, not कहने के लिए नहीं. We have actually consulted the South before we speak for the South. Sir, excuse me, sir. Yeah, I'm asking the question. Sir, yeah, this side. A complete failure of a rogue nation who happens to be a nuclear power and unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us. Sorry.
it is a reality to us, not uh, uh, you know, say in life, you have what you have, I cannot, I think Devendra ji said, like Pandavas could not choose the relatives, we also cannot choose our neighbors. We would naturally hope that good sense prevails, that, the practices of the past are not followed. That is our hope. And in diplomacy, it is important to be hopeful. But I would admit to you, it is a hope. सर पिछले 10-15 दिन से जो पाकिस्तान में घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमारी सोच क्या है, और जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो डिसीजन लिया है उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना, खासकर पब्लिक में करना, वो उचित नहीं होगा। जो इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है, ये आप जानते हैं कि ये ट्रीटी में दोनों देशों के अपने अपने इंडस कमिश्नर्स हैं। ये एक किस्म से ये टेक्निकल मामला है। हमारे जो इंडस कमिश्नर्स जो हैं वो आपस में इस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद हमें देखना होगा कि अगले कदम क्या होंगे। एकच मिनिट आहे सर, माईक वरती बोलूया. I have 2 points to make, sir. These are not questions, Please. but as a citizen of the country, I have a few suggestions, genuine. First is regarding the ratification of borders with China, sir. Ratification of borders with China. We find that every now and then these border clashes tend to take place because our borders are not ratified. I have a suggestion that we should go in for ratification of the borders on equal terms. No withdrawals are involved with minor adjustment, because after all, this problem has to find some solution. Our young soldiers getting killed and we celebrating only tactical victories. We have killed 4, they have killed 4, we have killed 12. There is nothing great to celebrate about that, sir. And second point, sir, or rather suggestion, in Delhi, we have got a road named after Krishna Menon Marg, who was responsible for 1962 debacle. So it should, I have suggestion that it should be named after either Major Shaitan Singh Paramveer Chakra or Subedar Jogendra Singh Paramveer Chakra. मला वाटतं आपण फक्त Since there are प्रश्न घेऊया का? suggestions, I don't think you need a reply. या सो प्लीज विनंती आहे की प्रश्न Good evening, विचारूया sir. आपण. Good evening, sir. Sir, let us bring back the discussion to the book, The India please. Way. Thank you very much. So my question is about this very distinguished way of diplomacy that we have put out there in the world. Do you see this nationalism and internationalism that we have put out as part of our diplomacy? Do you see other countries copying it or it reflecting it to their diplomatic way of dealing with international matters? So, thank you. I'm very glad you asked that question, because what happens is often in the world, this creates a lot of confusion and wrong reading of India. In our country, all of us will very proudly say, I'm nationalist. There are some countries, you will be surprised to know, where people will not say they are nationalist. It will look very negative. Now, there are countries where people say, I'm nationalist, and therefore I will not want to have much to do with the world. So, in many countries, nationalism, internationalism is opposite each other. But in our country, just look at this. See, we gave vaccines. Now, each one of us, when we read or we saw on YouTube or some social media, somebody in some country saying,
Thank you. मेरी जान बचा ली आपने. You know, the people who are next to me didn't give me vaccine. You were far away. You gave it to me. Didn't you feel good? Now, in our, you know, it's very interesting. For us, we have never seen, in fact, it is actually if you look at the last 9 years, you know, there's no doubt, you know, that the government, the politics of the day is more nationalist. And I don't think, you know, I'm proud of it. I don't think there is anything to be apologetic about. But the same nationalist people, they have done more projects abroad, they have helped more countries abroad, they have done, greater support, they have moved forward in disaster situations in other countries. So, if you read next time in a foreign newspaper, because they always, you know, foreign newspaper, they like using words like Hindu nationalist government. Okay, they will not say, you know, in America, Europe, they will not say Christian nationalist or whatever. These adjectives are very specially reserved for us. Okay, so next time you read it, ask yourself, how wrongly are they reading me? You know, that they actually do not understand that this country is getting ready to do more with the world, not less with the world. And one of the reasons we want to handle G20, we want to show the world this G20 will have 200 meetings. Through these 200 meetings, we want to show the world, please, world, come to see India, see the changes in India, see how much enthusiasm and positive there is sentiment there is for the world in India. So I thank you for that question. सर, आपने अपने भाषण में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास ये दो शब्दों का ये किया. अभी आपने नेशनलिस्ट के बारे में बोला. थोड़ा मेरा प्रश्न आपको राजनीतिक लगेगा, लेकिन हर भारतीय के मन में ये एक अस्वस्थता है कि कुछ लोगों में, कुछ पार्टियों के नेताओं में चीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो जब उस पर रिएक्ट होते हैं तो उनके मन में भारत के बारे में आत्मविश्वास क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बार बार वो चीन के बारे में कुछ बताते हैं और एक परसेप्शन देश में तैयार करते हैं. आप कई बार बताते हैं, आप उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन ये क्या उनकी केवल एक राजनीतिक सोच है या अपनी कोई निजी मजबूरी है? ये समझ में नहीं आ रहा है. देखिए, साफ कहूं तो विपक्ष में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, कभी उनके विचार भी ऐसे हैं कि मैं भी खुद कभी मुझे समझने में बहुत तकलीफ होती. अब अगर आप पूछें कि उनमें आत्मविश्वास क्यों नहीं है, यार वो ये लोगों को क्यों गुमराह करते, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैलाते, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं साफ कहूं तो वो भी राजनीति कर रहे हैं कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं. उनको पता है कि वो सच नहीं. उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते हैं कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं. वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ है. कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है. मेरे सोच में कभी कमी हो सकती, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता कि कहाँ जाना है. मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा. मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछूं. तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है, आत्मविश्वास की कमी. हो सकता है कमी कुछ और भी हो. गुड इवनिंग सर. सर, एक क्यूरियोसिटी है, why India way and why not Indian way? Is there any specific thinking behind this? 2, स्ट्रेटेजिक कल्चर की बहुत बार बात होती है, तो आपने जैसे
कृष्ण का उल्लेख किया है, कृष्णा चॉइस के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे केवल जो भी पीरियड में आप नहीं दिखता. This is a rare thing. They are civilians serving foreign service for 5 decades and delivering speech in Hindi. I grew up in Delhi. To be में बोलते हुए why strategic culture is lacking and how it is changing. नहीं, देखिए इसका उत्तर यह है. एक तो वाई इंडिया वे नॉट इंडियन वे, इट साउंड्स नाइसर. नहीं, इट साउंड नाइसर, पर इसका एक किस्म से अलग अलग, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडियन वे साउंड्स मोर लाइक अ मार्क, उस दिशा में दे इंडियन वे. पर इंडिया वे ऑल्सो साउंड्स कि भाई इंडिया का अपना सोल्यूशन है, इंडिया की अपनी सोच है. तो समवेयर देयर इज अ सटल डिफरेंस. जो आपने जो पूछा, कहा कि जो श्री कृष्ण की बात की, महाभारत की बात की, देखिए मेरा जो उस पे जो लेख है, मैंने लेख इसीलिए लिखा क्योंकि मैं 40 साल से, अगर मैं अपने यहाँ भी अपने कोलीग्स, अपने जो साथियों से बात करूं, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन था, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वो वेस्टर्न ही होगा, कहेंगे मेटरनिक सबसे बड़ा दुनिया. अगर मैं उनको कहूं कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लोमेसी पे सबसे अच्छी किताब क्या है, तो कहेंगे वो मैकियावेली है, वो हैरल निकलसन है, वो अर्नेस्ट साटो है. तो मेरा लिखने का कारण ये था, मैं अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई घर में देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे. नहीं, और ये बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था. और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे. उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया. उसके बाद माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट. तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूँ. कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं. एक दो नॉन अलाइन निकले बीच में, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे. या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट. अर्जुन की दुविधा क्या थी, कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं. पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था. या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते. स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद
आपको पता है उन्होंने क्या क्या। या आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, हाँ, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में जो राजनीति में, कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक, और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। आज हम कभी कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश है। अब ये याद रखिएगा कि पांडव जो है, पांडव कौरव की प्रोपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी, उनके पास छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी, अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था, और श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो और हम कभी कभी रेपुटेशनल कॉस्ट की बात करते हैं कि रेपुटेशन जो है कूटनीति में, राजनीति में भी, जिस पे आप भरोसा, अब भरोसा की मैं क्या कीमत बताऊं आपको, जिस पे भरोसा करते हैं उसकी जो वैल्यू जो है, पार्टी हो, आदमी हो, देश हो, रेपुटेशन की बहुत कीमत होती। और पांडवों की रेपुटेशन जो है कौरव से इतनी अच्छी थी, रेपुटेशन का बहुत फर्क पड़ा। और कभी कभी ये भी है कि जो बड़े गोल, जो लार्जर गुड के लिए कभी लोगों को माने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये भी इसके बहुत उदाहरण, जो युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के बारे में कहा, या जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। अब टेक्निकली आप कहेंगे कि ये गलत चीज किया, पर उन्होंने किया एक कारण के लिए किया, उनका एक लक्ष्य था। आप कहेंगे कि अब अगर आप लार्जर गुड के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उन्होंने जो किया वो ठीक किया, आप टेक्निकली देखें तो अलग बात थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज हैं, जैसे आप स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, जो जब कृष्ण भगवान ने सूर्यास्त का एक किस्म से इल्यूजन क्रिएट किया तो जयद्रथ को लगा कि वो बच गए। तो मैं आपको ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एनालिसिस हो, हम जो हैं इतनी माने आसानी से ये शब्द लेते हैं, ट्रोजन हॉर्स, अखिलीस हील, गॉर्डियन नॉट। अब ये कहाँ से आते हैं ये शब्द? किसी और के कथा से आते हैं। अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी वही कथा पढ़ता हूँ, मुझे भी उसमें रुचि है, पर मैं हमारे देशवासियों को समझाना चाहता हूँ कि भाई आप अपने बारे में भी पढ़िए, इसका भी महत्व समझिए। हम आपस की बातें में कम से कम इसका तो प्रयोग करें कि अगर हमें स्ट्रेटेजिक कल्चर, सचमुच अगर इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर दूसरों के अनुभवों और दूसरे के कथाओं से नहीं बनेगी। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के एपिक से बनेगी। Good evening, sir. Sir, here many countries, many countries in the world today are claiming compensation for environmental damages they incur because of certain activities happening in neighboring countries, for example, war or other activities. In such case, if such scenario happens in case of India, what could be our line of thought? No, you see, we have a much more fundamental issue. If you look at this whole climate change, so climate action, climate justice, from Kyoto, developed countries have been promising to finance. They have never delivered on it. They will keep saying, every conference, they will tell developing countries, please raise your climate ambition. So they
they will raise climate ambition. West forget about financial ambition. They will not even deliver on old financial promises. So the real issue today, it's one thing to say, yes, loss and damage, there is progress, and it is good that there is progress. But the fundamental issue on climate change is the countries who have occupied carbon space, countries who still lifestyle. Prime Minister last year started this campaign called Lifestyle for Environment. If you look at I have lived in Western countries. If you look at the lifestyle, it is actually very wasteful. So the real issue is, how do the countries who have occupied carbon space, who have created today the climate crisis, how do they take the responsibility, and how do they allow for corrective action? How do they finance that corrective action to be taken? And very frankly, this has been a very, very tough and very frustrating experience. I wish I could tell you that there is something, very positive, very good, which is likely to happen. But the experience has frankly been very disheartening. थँक्यू Hello, सो sir. मच. मला असं वाटतं आपण सरांची रिक्वेस्ट आहे. हा शेवटचा प्रश्न होता आत्ताचा. सरांना जायचंय पुढे, तर आपण कृपया थांबूया. तुम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते. सगळेच प्रश्न चांगले आहेत सर. आपण त्यांच्या विनंतीचा मान ठेवू, माझ्या नाही. माझ्या नाही. एकच फक्त प्लीज लास्ट वन. ओके, प्लीज. sir. Hi. You have served as a external affairs secretary, and now you are serving as a external affairs minister. Which job you like the most? No, I think each job had its plus. When I served with as foreign secretary, I had a very, very good minister, Sushma ji, and we got along personally very well. I would say our combination was very good, minister secretary combination. But I did learn one thing. There is a difference in responsibility, and there is a difference in, I would say, the overall sense from being a secretary and a minister. Because a secretary still has a minister above them who's answerable to parliament, answerable in public, who still gives protection and comfort. कि somewhere है कि किसी और माने वो there is that umbrella. It was for me something which I value very much, and in many ways today that has shaped my own behavior as a minister, that I have to infuse confidence in my system, that उनके लिए वो feeling होना चाहिए कि भाई वो हैं हमारे लिए, and that they will do whatever is necessary in any situation, and in good effort. So it's not an easy question to answer, but I would only say this very frankly. I feel very privileged that if somebody had asked me 10 years ago, 20 years ago, what is the biggest dream you can ever achieve, I would have in all honesty said, as someone in service, I mean, who does not want to head the service? It's swabhavik. For me to become foreign secretary was frankly for me the limit of my ambition. I had never even dreamt of becoming a minister. I'm not sure any prime minister other than Narendra Modi would have made me minister. I really also sometimes ask myself that if he was not the prime minister, would I have had the courage to enter politics? I don't know.